Okay, so let's start. The calamity of conformity groupthink. So basically, what is this? कि हम लोग suppose we have a boss, okay, and we are in a group. He is a senior. तो हम लोग क्या करते हैं ना, वी एग्री टू हिम एवरीथिंग जो वो बोलते हैं हम लोग एग्री करते हैं. सपोज किंग है, किंग से प्रजा है, तो ये जो बोल रहा है इससे सब एग्री करेगा, कोई अपना ओपिनियन देने से डरता है. दैट इज़ अ ग्रुप थिंक. ये जो बोल रहा है उसको सब सही मान रहा है, कोई अपना लाइक किसी को लग रहा है कि समथिंग लाइक दिस होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, ऐसा बताने में भी डरता है. दैट इज़ ग्रुप थिंक. कोई एक लीडर का ओपिनियन पे ही सब चल रहा है, अपना ओपिनियन या फिर अपना व्यूज़ को नहीं रख पा रहा. दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रुप थिंक. तो वही चीज़ है कि हम लोग बस लीडर का चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं. दैट इज़ द कैलेमिटी ऑफ कंफर्मिटी. हम लोग लीडर का जो जो बोल रहा है वी आर जस्ट कंफर्मिंग दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. दैट इज़ कवर्ड एयर. सो व्हाट डज इट मीन? सी उसका वी विल सी द एग्जाम्पल्स कि कैसे कैसे ग्रुप थिंक के चलते डिजास्टर्स हुआ है बहुत बार. हाउ इट इज़ नॉट गुड. ओके, so those things are there. Those we will see. Apart from that, this is a good chapter. So let's start. Just a second. Yes. So have you ever bitten your tongue in a meeting? Surely you sit there, say nothing, and nod along to proposals. After all, you don't want to be eternal naysayer. ना बोलने वाला तुम नहीं हो. Okay. Moreover, you might not be 100% sure why you disagree, whereas the others are unanimous. Okay. Suppose three people are there, there are total four people, other three are in unanimous, they are in conformity, and you are thinking something different. So you will think that why will I say those things? Why will I say no? That is the thing. So moreover, you might be 100% sure why you disagree, whereas the others are unanimous and far from stupid. मतलब अदर्स बड़े बड़े हैं तो दे आर नॉट स्टूपिड कि वो लोग एग्री कर रहे हैं. सो यू कीप योर माउथ शट फॉर अनदर डे. When everyone thinks and acts like this, groupthink is at work. This is where group of smart people make reckless decisions because everyone aligns their opinions with the supposed consensus. Thus, motions are passed that each individual group member would have rejected if no peer pressure had been involved. ऐसा मोशन पास हो जाता है जो each individual group member would have rejected if no peer pressure involved. Groupthink is a special branch of social proof, a flaw that we discussed in chapter 4. तो चैप्टर 4 में हम लोग सोशल प्रूफ का फ्लॉ देखे थे. उस पर क्या था, जैसे सपोज बहुत बड़ा पॉपुलेशन, अगर सपोज 50 मिलियन लोग एग्री कर रहे किसी इनकरेक्ट चीज़ से, 50 मिलियन पीपल आर एग्रीइंग विथ समथिंग इनकरेक्ट थिंग. तो अगर दे आर एग्रीइंग विद दैट इनकरेक्ट थिंग, इवन तब भी वो इनकरेक्ट ही है. इवन देन द थिंग दैट थिंग इज इनकरेक्ट ओनली. ओके, suppose we are saying that humans have four legs, so that is an incorrect thing. If 50 million people are agreeing to it, it does not make sense. And the example is very absurd, but it's the case. In March 1960, the US Secret Service began to mobilize anti-communist exiles from Cuba, okay, most of them living in Miami, to get against Fidel Castro's regime. सो यूएस सीक्रेट सर्विस, फिडेल कैस्ट्रो कोई क्यूबा का लीडर था होगा उस टाइम पे, तो उस वहाँ से वो एंटी कम्युनिस्ट का एग्जाइल्स को मोबिलाइज करना चाहता था, मतलब हटाना चाहता था. तो इन 1961, 2 days after taking office, President Kennedy was informed about the secret plan to invade Cuba. 3 months later, a meeting took place at the White House where Kennedy and his advisors all voted in favor of the invasion. सब कोई फेवर में था कि हाँ इन्वेड करो क्यूबा में, मारो मोबिले एंटी कम्युनिस्ट्स को. On April 17, 1961, a brigade of 1,400 exiled Cubans landed at the Bay of Pigs on Cuba's south coast with help of US Navy, Air Force, and the CIA. The aim was to overthrow Castro's government. However, nothing was as planned. On the first day, not a single supply ship reached the coast. The Cuban Air Force sank the first two, and the next 200 and next two turned around and fled back.
तो यूएस जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। दे सेंड द शिप्स, शिप्स को क्यूबा का आर्मी, क्यूबन एयरफोर्स स्ट्राइक कर दिया, और 4 शिप भेजा होगा, 2 को फिर उन लोगों को वापस बुलाना पड़ा। ओके, अ डे लेटर कैस्ट्रोज आर्मी कंप्लीटली सराउंडेड, ब्रिगेड लगाया था। दे द यूएस आर्मी पुट ब्रिगेड ऑफ 1400 ब्रिगेड लगाया था। ब्रिगेड को भी कंप्लीटली सराउंड कर लिया कैस्ट्रोस का आर्मी। ऑन द थर्ड डे 1200 सर्वाइवर्स को कस्टडी पे ले लिया जो यूएस से गए होंगे। ठीक है। फिर कैनेडी इन्वेजन ऑफ द बे ऑफ पिग्स इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप्स इन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। दैट सच एन absurd प्लान was ever agreed upon, never mind put in action, is astonishing. ओके, ये सबसे बड़ा लाइक फेलियर था इन्वेजन का। All of the assumptions that spoke in favor of the invasion were erroneous. For example, Kennedy का team underestimated the strength of Cuba's air force. Also, it was expected that in emergency, the brigade would be able to hide in the Escambray Mountains. जो यूएस का ब्रिगेड गया था वो लोग एस्कैम्ब्री माउंटेन में हाइड करेगा, बट एस्कैम्ब्री माउंटेन बहुत ही दूर था, देखो 100 माइल्स अवे था। ओके, a Gland Escambray Mountains में hide करेगा and carry out underground war against Castro from there. But glance at the map shows that refuge was 100 miles away. जो mountains था वो 100 माइल away था from the Bay of Pigs. 100 किलोमीटर बहुत दूर था. With an insurmountable swamp in between. स्वैम भी था, ऐसा बड़ा स्वैम लाइक ओवरकम करना मुश्किल था। सम बैरियर दैट इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग ओवरकम। ओके, insurmountable बड़ा था। And yet Kennedy and his advisors were among the most intelligent people to ever run a American government. What went wrong between January and April 61? इस स्पीच में क्या हुआ उनके साथ जो इतना खराब डिसीजन वो लोग लिए? फिर साइकोलॉजी प्रोफेसर Irving Janis had studied many fiascos. He concluded that they share the following pattern. Members of a close-knit group cultivate team spirit by unconsciously building illusions. One of the fantasies is a belief in invincibility. If both our leader, in this case Kennedy, and group are confident that the plan will work, then luck will be on our side. Next comes the illusion of unanimity. If the others are of the same opinion and dissenting view must be wrong, एनी डिसेंटिंग में मस्ट बी रॉन्ग, ये भी हम लोग सोचते हैं। यूनानिमिटी में हम लोग सोचते हैं कि अदर्स आर ऑफ द सेम ओपिनियन, सो डिसेंटिंग व्यू मस्ट बी रॉन्ग. No one wants to be naysayer that destroys team unity. Finally, each person is happy to be part of the group. Expressing reservations could mean exclusion from it. Okay? हर पर्सन को पार्ट ऑफ द ग्रुप बनना. इन अ रिवॉल्यूशनरी पास्ट द सच बैनिशमेंट गारंटीड डेथ. किंग ये सब का एरा में अगर ऐसा करते थे, अग्री नहीं करते थे, तो इससे डेथ मिल जाता था. हेंस आवर स्ट्रॉन्ग अर्ज टू रिमेन इन ग्रुप्स फेवर. तो दैट्स वाई हम लोग का स्ट्रॉन्ग अर्ज है कि हम लोग ग्रुप के फेवर में रहे. ग्रुप थिंक इज नो स्ट्रेंजर इन द बिजनेस वर्ल्ड. अ क्लासिक एग्जाम्पल इज द फेट ऑफ वर्ल्ड क्लास एयरलाइन स्विस एयर. Yes, Swiss Air. Here, a group of highly paid consultants rallied around the former CEO and bolstered by the euphoria of past success. They developed a high-risk expansion strategy, including the acquisition of several European airlines. The zealous team built up such a strong consensus that even rational reservations were suppressed, leading to airlines collapse in 2001. So team इतना enthusiast था, इतना zealous था, that team built up such a strong consensus that even rational reservations were suppressed, leading to airlines collapse in 2001. If you ever find yourself in a tight, unanimous group, you must speak your mind, even if your team does not like it. Question tactic assumptions, even if you risk expulsion from the warm nest. And if you lead a group, appoint someone as devil's advocate जो खराब चीज़ बोले तुमको. She will not be most popular member of the team, but she might be the most important. So if you ever find yourself in a tight unanimous group, you speak your mind even if your team does not like it. Question tactic assumptions even if you risk expulsion from the warm nest. Okay, and if you lead a group, appoint someone as devil advocate. She will not be the most popular member of the team, but she might be the most important. Okay, so if you are in a group, speak your mind. Speak your mind. Apart from that, question करो tactic का assumption को, whatever they are planning. And if you are leading a group, appoint a devil advocate.
through that you can get feedback, know the bad things, those things are there. So thank you. Bye bye.